came to pick up my son from school. Yeah, I have been adapting this new kind of hairstyle because, you know, new journeys, new steps, new everything new. So why not new hairstyle too? Yeah, I have been, because all the people I work with are so like brand new. They're young kids. I finally have the job that I wanted for, you know, being in the same field as I went to study for in my old age. So that is exciting. बहुत मजेदार काम है, you know, it's easy है, बहुत ही ज़्यादा easy. I take care of some folks, you know, I kind of do their treatments, give them medication, pretty much everything. It's just amazing. It's just amazing. And a little promotion too from what I was getting before, so that's nice. It's always nice to get more money, right? Who doesn't need money? काफी देर से मैं नहीं आ रही थी live because I'm kind of a little nervous, a little tensed about my test situation, जो कि state. I am just I was doing some grooming business in the car because this is a very what do you call that? This is a very good light to have. The sunlight here in the car is like the perfect kind you can use for your grooming and stuff. So this is like, I wanted to make quick jump on here quickly and just do this small video, really tiny video. If you are an RN and you studied elsewhere other than the American schools, right, I would suggest you just take the sign up for the NCLEX RN and then just get the Kaplan NCLEX RN book and start studying from that. I would highly suggest Kaplan book, 6 months in, just read it. 6 months पहले बाद के आप टेस्ट डेट ले लें उनसे. दुनिया में आप कहीं पर भी हो आप कर सकते हैं ये वीडियो, ये you know test, and then get like watch YouTube videos on all the concepts. Hi Haris. जी छोटे भाई मैं यहाँ ही हूँ. तो yeah, just watch videos of like, what do you call that, जो concepts हैं जैसे cardiac का concept है, neonatal care का concept है, blood pressure का concept है. इन सब के concepts जो है ना, ये आप YouTube में डालें और वहाँ पर reviews जो है ना लोगों के nursing education के बारे में, वो आप सारे study करें, ठीक है. Clinic KLIMEK. I am good, Haris, how are you? Yeah, तो वो क्लिनिक रिव्यूज करके कुछ है, डॉक्टर शेरन उस पे है, वो बड़े अच्छे वो देती है एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स करती है. यूट्यूब पे काफी सारे लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, तो वो आप यू कैन डू दैट. और थैंक यू सो मच हारिस. तो वो आप वहां से आप स्टडी करना शुरू कर सकते हैं. यू नो, इफ यू आर ऑनलाइन और आप NCLEX RN की स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके पढ़ना चाह रहे हैं, मिस सैरा RN करके है यूट्यूब पे, उसके आप सारे लेक्चर्स वॉच करें, सारे कॉन्सेप्ट्स वॉच करें, ठीक है. नोट्स बना लें आप, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए. दूसरा और कौन है, और लेवल अप RN है, वो बहुत अच्छी है. दूसरी डॉक्टर डी नर्स डी है एक, वो बहुत अच्छी है. तो इस तरह से आप कैप्लन की बुक ले लें, वहां से स्टडी करना शुरू करें और यूट्यूब पे सारा जो है ना वो स्टडी करें, ठीक है. आपका NCLEX RN जो है ना मिनट में पास हो जाना है. बाय गाइज. Hi guys, so I wanted to make a short video about the test. I had so I did 16 months of schooling with Mildred Elley in New York, Albany, New York on Central, and this school is known for like a lot of other certifications as well.
I highly recommend them because my education is not from the United States of America, so it was kind of hard for me to kind of bring everything over, right? So all they asked from me was my high school diploma, which I gave it to them, and they were the ones that had me fill out like a FAFSA application and everything, right? So what they did was, from that money that they got from my FAFSA, they also got my high school diploma like verified and everything. It was like, I think $300 somewhere from New York City, that I think it's called Sterling. So they verified that to know कि मैंने high school तो कम से कम pass किया हुआ, which I have. Then we had a lot of teachers taught a lot of different courses, like psychology, ANP 1 and 2, math was very easy for me, but yeah, it was just really simple ratio and proportion questions. And तो वो जो है मैं हमने किया, right? And then they have something, they used ATI, right, which is the one that I used too for everything. And then they made us do all these courses, right? And then towards the end of it, they had like clinicals for PN courses, like PN, to like how would you act when you are in a nursing home setting, or how would you act when you are in like handicapped kids area settings. How would you act if you are like in number 1 trauma hospital setting, which we were at Albany Med a bunch of times. So they were really good. They made us do all the work. They're very, very strict because my hair looks awful. So they made you do all the work. The thing is that even if you're in Canada, hi Asher, even if you're in Canada, or like you're in say England or wherever you are, right? The school that you join in, like the whatever you work they want you to do, आपको वो जो भी काम कहते हैं ना करने के लिए, hi Asher, जी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने किस तरह से किया, मुझे क्या चीज़ पसंद आई या whatever टिप्स थोड़े से. So whatever, अगर आपको कोई भी स्कूल कोई भी काम देता है ना, ऑफ कोर्स यू हैव टू रिलीजियसली डू दैट, लाइक वो आप काम ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने वो आपको पास ही नहीं करेंगे अगर आपने उनका काम ना किया. जो भी टीचर्स आपको क्लास में जो भी काम देती हैं ना, वो आपने ज़रूर करना है. हाय आशर. तो वो तो डन डील है, लाइक यू हैव टू डू दैट. मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि ऑनेस्टली मेरी प्रीवियस जॉब, आई वांटेड टू जस्ट गेट डन विद इट, बिकॉज वो मेरा करियर कहीं जा नहीं था रहा. और वहाँ पर जो है लोग सांपों की तरह के लोग थे जिनको मैंने हेल्प वगैरह की, और फिर उन्होंने जो है मुझे डसना शुरू कर दिया, खून चूसना शुरू हो गए वो मेरा. और बॉस के साथ मिल के मुझे क्या झूठ सच कहानियां उसको सुना के तो मेरा बुरा हाल कर दिया. आई वाज जस्ट लाइक, I had so much anxiety, so much stress from all the situation. So बहुत मैंने मुश्किल जो है ना, बहुत मुश्किल 2-3 साल मैंने काटे हैं. तो फिर आखिर में आके मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये क्यों नहीं करती. और इसके ऊपर एक्चुअली आई एम गोना मेक अनदर वीडियो के why I decided to do nursing school. Like there has to be, like this is not just I woke up one day and I was like हाँ जी मैं तो हुण नर्सिंग करनी है. Like उसकी बहुत प्री प्लानिंग है, और उसकी years and years, सालों के सालों की जो मैंने जो है ना अपने आप को मैंने परखा, और मैंने अपने आप को लाइक सेल्फ एनालिसिस मैंने किया, अपने आप को मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है, और मुझे किस तरह की मेरी पर्सनालिटी जो है या मेरा कैरेक्टर जो है, मैं उसको किस तरह से जो है ना हाउ आई कैन, विच फील्ड आई शुड गो इन, कि जिसमें मुझे जो है ना फ़ायदा हो. तो वो मुझे तकरीबन 6-7 सालों से, इवन मेरे भाई की शादी पे मैं गई तो वहां पर किसी को ना, आई थिंक किसी को ब्लीडिंग ऐसे शुरू होगी ना हाथ में, मैंने उनका हाथ एकदम से मैंने
ढेर सारे मैंने पेपर टॉवल पकड़े, उसको मैंने ऐसे किया, मैंने उसका सारा उनकी जो स्किन थी वो वापस जो है वापस डाली. इट वाज अ कन्वल्जन, एक्चुअली कन्वल्जन वूंड था वो, वापस डाली. आई स्टॉप्ड द ब्लीडिंग. सो I was like, I have been a nurse all along anyways, I did that and I was like, wow, ये मेरा. फिर वो एक इंसिडेंट्स था, और या उसका मैंने लदा से एक वीडियो बनानी है कि हाउ आई गॉट टू, हाउ डिड आई एनालाइज एंड हाउ डिड आई thought I should do this. So that's another live for another day. But it was, the signs and symbols from the universe have been there. I was in denial. I was literally in denial ke ये मुझे नहीं करना चाहिए, because I felt like it was because my mom did it, so it's like, maybe it's not something of higher level or something, and that is such a bad thing कि आप जो हमारे माँ बाप ने किया होता है ना, हमें ऐसे लगता है, और उन्होंने हमारे जहन के अंदर ये ड्रिल भी किया होता है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ है, ਤੁਸੀਂ ना ਇਹ करियो, because ये कोई क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से वैल्यू नहीं करते, वर्थ अपनी नहीं समझते, तो वो समझते हैं कि हमारे बच्चे भी ये ना करें, ये तो कोई वर्दी नहीं है. सेल्फ वर्थ हमारे पेरेंट्स को है ही नहीं है ना, जिसको कहते हैं. तो उसकी वजह से देयर वाज नो सेल्फ वर्थ, एंड शी वाज लाइक, माय मॉम इज ऑलवेज लाइक, डोंट डू दिस, ये तो अच्छा नहीं है, तू बैचलर्स कर ले, तू आगे से रिसर्च कर ले. कोई 10 साल के लिए बंदा PhD करने बैठ जाए, 10 साल के लिए पढ़ाई ही करता रहे, आपकी उम्र जो है वो गुजर जाए, and then you have like 20 more years to go to live and stuff. Anyways, long story short, so I went to Mildred Elley, and they just helped me so much. They helped me a lot, and I really recommend that school. Stay to yourself, because there are students that will always be there that take ideas and tips from other students, like especially the very smart ones, because I had this one girl in my class, Jamie, if you're watching this, she was so smart, such a smart girl, and I had picked so much from her कि वो किस तरह से पढ़ती है, और मैंने कहा कि नहीं भाई मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगी. And she used to write like notes of everything, like anything she can't, like she thinks it's important, she'll write it down. Like she had notes and notes of just writing down things. So I started doing that too towards the end. And it's pehle, like I used to do that anyways too. But towards the end of the school, when there was like concentrated nursing classes, I was writing down everything too. Like I wanted to remember all the concepts and everything, and especially pharmacology. I have like books and books. I'll show you one of these days. I'll make a reel or something. I had written down every single like ATI test that I was doing, which was very pharmacology based. I was writing down all these medications that I don't know about. I was writing their names. What are their adverse effects? What do they do? The school wanted us to make like what do you call them? The med cards or something, like the cards that you have like the pharmacological action. They want you to write the generic name, the brand name, this and that, side effects, nursing education, this and that, all in like these boxes, right? Templates. I never did that. It's just not my style, and I'm glad that I still was able to pass the test, because I study very differently than most people, because I have like attention problem, and I have like a lot of issues basically. So I'm not a cookie cutter student. I have my own ways of study, especially like this is I'm Pakistani, this is not my first language. English is my second language, and so I do have to like work hard, and I understand like words and questions like differently, and I do have them in the reels somewhere, like how Pakistani log jehde ne oh English the question पढ़ के तो उन्होंने किस तरह समझते ने, उन्होंने किस तरह प्रोसेस कर देने at different day. And it's like so NCLEX में काफ़ी सारी आपको जो है ना questions में जो है, अगर आप 30 साल से कम है आपकी उम्र, तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोड़ा कुट करके नर्सिंग कर लो जे बाहर आना जे किसी भी मुल्क च,
नर्सेस ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ that's an easier way out if you want to learn and just अपनी own कमाई पाकिस्तान में भी करने के लिए you can do that. अगर आप जो हैं वो कहीं के मैनेजर नहीं लगे हुए और आपके पास और कोई अदर स्किल नहीं है तो this is like one of the easier things to just do that in a couple of years and start making money. दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस एवरीथिंग जो है ना, पढ़ें. बुक आपके पास अगर कोई है, आपने पहले नर्सिंग की हुई है और आप सिर्फ NCLEX की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वर्क सारा फिल आउट करें, पढ़ें, जस्ट स्टडी लाइक जस्ट. अभी आपने देखा है मैंने काफ़ी देर से मैं ऑनलाइन नहीं थी आ रही बिकॉज सच अ फेसबुक इज सच अ डिस्ट्रैक्शन एंड यू जस्ट वाना जस्ट फोकस. और मेरे लिए बहुत एक्चुअली नर्व रैकिंग था ये सारा कुछ क्योंकि जो है ना नाकामी एक होता है कामयाबी से नाकामी में जाना, वो इंसान को जो है ना तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है एक तरह का. तो और फिर मेरे लिए मेरे बहुत से दुश्मन भी हैं तो वो भी मुझे वॉच करते रहते हैं. और द थिंग इज के बहुत नर्व ब्रेकिंग था ये सारा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा. लाइक मेरी अम्मी ने बहुत मुझे हेल्प की है. ऑफ कोर्स मेरे बच्चों का जो बाप है वो भी काफ़ी हेल्प उसकी है, बहुत ज़्यादा. मानो की मेरी कज़न की बहुत सपोर्ट है. हाय शमाउन, कैसे हो? तो या इट्स जस्ट नॉट दैट इजी. इट्स अ वेरी hard thing, but I did it. But I did it. I'm so I don't know, I'm so excited. बहुत आज मैं काफ़ी खुश थी सारा दिन. जिस रैंडमली मैं गाने गा रही थी और मेरा मूड बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा. तो या जिनके भी जो भी पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं NCLEX का एग्ज़ाम दे सकते हैं. उनकी वेबसाइट है भाई, जाके गूगल में डालें आप के आई वॉन्ट टू टेक द NCLEX, तो आप उसकी तैयारी करें. उसकी बुक्स वगैरह मिलती हैं, उर्दू बाज़ार चले जाएं, बुक्स वगैरह पढ़ लें वहाँ से जाके. I did use the Kaplan book because somebody at my jobs had suggested that I do the Kaplan book. I bought the Kaplan book and I कैसे हो शमाउन, कैसे हो आशर? So I bought उसको क्या कहते हैं, Kaplan की book I bought and I read it. ये हल्के देख रहे हैं मेरे, I read the whole thing literally. I just like उसके मैंने सारे जो MCQs थे वो मैंने सारे किए बैठ के, and I read literally like sat down and I read each and every rationale. Even in ATI testing too, when I would take a test and whatever wrongs and rights I was getting, even the right ones, when I was getting the right answers, I was going and reading the wrong answers too. Like, what is wrong? Like, what option is wrong that I shouldn't have chosen, which I didn't choose? And then I was reading the right option as well, 2-3 times. Take your time, like read. हेलो मैडम. शमाउन, मेरा टेस्ट था ना तो मैं फिर इसलिए ऑनलाइन नहीं थी आ रही क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना. पढ़ रही थी मैं ताकि थोड़े से डॉलरों में कमाई ज़्यादा हो सके. डॉलर बड़ा कीमती जे. तो एनीवेज yeah, I was studying, I was away, and I was reading my book because the rest of the time I was working because I need to pay my bills. I have a lot of bills. I have a loan that I need to make payments on, and फिर बाकी टाइम मेरे बच्चों के साथ मेरा स्पेंड होता है. मेरी ड्यूटी है उनको लेके जाने की स्कूल, लेकर आने की स्कूल से, तो या वो उसमें स्पेंड हुआ. तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. आप, और मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा कोई कीड़ा बन जाएं, आप किताबी कीड़ा बन जाएं, नहीं. हाय भट्टी साहब, आप जो है आप नॉर्मल पढ़ाई करें, जो भी आपकी पढ़ाई है नॉर्मल सिर्फ करें, कोई ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है. बट या अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप ज़रूर सजेस्ट करें 8th 9th 10th का जो आपका मैथ है
और जो बेसिक केमिस्ट्री बायो फिजिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्यूशन रखें, जो भी आप कर सकते हैं डू इट, बिकॉज यू नीड दैट बेस जो है। गाइस मैं चलती हूँ, आजकल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पास कर लिया है टेस्ट। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू सो मच भट्टी।